Hi everyone, today we're talking about capillaries. Now, we have three types of capillaries: continuous, fenestrated, and sinusoidal. It's very important for us to understand what are the examples, इनका क्या काम होता है, इनमें क्या differences होती हैं, and this information is going to be there with you forever. And this is quite a repeated information, बार बार आती रहती है, so let's just get done with it. First of all, the capillaries are classified into three different types. Each type is related to specific functions. What are these three types? You have continuous capillaries, fenestrated capillaries, and sinusoidal capillaries. The continuous capillaries, when you look at them, you will get to know that they have 7 to 9 micrometer diameter and they do not have any pores or gaps or any sort of discontinuities. एंड फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो यू कैन सी इसमें कोई पोर्स नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटीज नहीं है, कोई भी इंटरसेल्यूलर गैप्स भी नहीं प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूस कैपिलरी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज कि इनमें ऐसी क्या एग्जाम्पल होती हैं। तो जब आपका ब्रेन है उसमें यू हैव कंटिन्यूस कैपिलरीज, हेंस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर में इंपॉर्टेंट है कोई भी अननेसेसरी इनइम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी अंदर मत जाए, राइट। ओनली गैसेस एंड exchange of gases and small molecules, only the gases and small molecules that are extremely important से वही pass down हो सकती हैं into the brain। तो इसमें ब्रेन आ गया, उसके अलावा you have lungs, you have your skin, you have muscle. So these are examples for the continuous capillaries and it is very important for you to have these in your fingertips, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंटिन्यूस। अब फेनेस्ट्रेटेड में क्या होता है, फेनेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विंडो। सो यू हैव विंडो लाइक होल्स इसमें, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये एक एंडोथेलियल सेल है तो उस एंडोथेलियल सेल के अंदर भी फेनेस्ट्रेशन होंगे, उसके अंदर ही होल्स होंगे। और इनका डायमीटर भी सेम है 6 to 9। इसका तो 6 to 7 to 9 माइक्रोमीटर है ना। तो इसका देर सेइंग दैट these capillaries have the same diameter as that of the continuous capillaries, but the walls of the fenestrated capillaries are characterized by the presence of the circular pores। अब डायमीटर सेम है, इसका डायमीटर था 7 to 9 माइक्रोमीटर ना, इसका 7 to 9 माइक्रोमीटर था, इसका भी 7 to 9 माइक्रोमीटर होगा, लेकिन इन फेनेस्ट्रेशंस का डायमीटर अलग है। इनका भी अलग डायमीटर है, अराउंड 60 to 80 नैनोमीटर इन फेनेस्ट्रेशंस का, या इन सम बुक्स दिस इज 60 to 100 नैनोमीटर डायमीटर्स। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज वैल्यूज, हालांकि ये ज़्यादा याद नहीं रहती बट because ये रिपीट होंगी आगे भी स्टार्टिंग व्हाट किडनी, सो दीज विल गेट रिपीटेड। तो जो फेनेस्ट्रेशंस है उनका डायमीटर 60 to 80 है, वरना इफ यू टॉक अबाउट द कैपिलरी उसका डायमीटर है 6 to 9, राइट, और 7 to 9 माइक्रोमीटर। सो दैट्स माइक्रोमीटर एंड दिस इज नैनोमीटर, ये तो ऑब्वियसली दिस इज मच स्मॉलर। And this allows the rapid exchange of materials between blood and tissues. What sort of material? Like small solute, इनका rapid exchange हो सकता है, right? यहाँ आप आगे पढ़ेंगे rapid fluid and solute exchange। अब उसके अलावा fenestrations very important। इनका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है किडनीज। किडनीज में यू हैव फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आपके ग्लोमेरुलस में, फिर इंटेस्टाइन्स में जो जीआईटी म्यूकोजा है उसमें जो भी कैपिलरीज होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। देन ऑल्सो द एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें जितनी भी कैपिलरीज होती हैं एंडोक्राइन कैपिलरीज दे आर फेनेस्ट्रेटेड endocrine glands में, right? So these are the three examples and these should be on your fingertips. When you talk about sinusoidal, sinusoidal में ऑब्वियसली इसके अंदर तो साइनसॉइडल में क्या होता है कि इवन इंटरसेल्यूलर गैप्स होती हैं, हाँ अंदर बीच में फेनेस्ट्रेशंस भी होंगे सेल के अंदर, लेकिन इंटरसेल्यूलर गैप भी होता है, ठीक है। सो देयर अगर ये दो एंडोथेलियल सेल्स इनके बीच में भी बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। सो दीज आर द सेल्स और इनके बीच में गैप है, राइट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर आप देखें इसमें भी इंटैक्ट है, इसमें भी इंटैक्ट है, लेकिन साइनसॉइडल में इवन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस। सो इवन द basement membrane is discontinuous. There are large fenestrations. They're also present here. And other than that, you have also intercellular gaps. तो intercellular gaps भी हैं, fenestrations भी हैं। इसमें सिर्फ fenestrations हैं और बाकी हर चीज़ intact है, right? और sinusoidal का example क्या है? This is very important for you to know कि sinusoidal जो capillaries हैं इनके examples में you have liver, स्प्लीन, बोन मैरो। अब ये किस तरह आप याद कर सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। हाँ पेरिसाइट्स तो देखें हर जगह, दीज आर द पेरिसाइट्स, यहाँ भी पेरिसाइट है, यहाँ भी पेरिसाइट है, लेकिन साइनोसॉइडल में यू ऑल्सो हैव अदर फेगोसिटिक सेल्स। तो उन फेगोसिटिक सेल्स की प्रेजेंस की वजह से यू कैन रिकॉल कि इसमें लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। So again, let's read from the book text and then the chat GPT information. Continuous 79 micrometer in diameter and they do not have any pores, gaps or discontinuities in their wall.
Most of the capillaries of the body belong to this variety. Example क्या है? Muscles, lungs, brain, and also skin. Fenestrated. These capillaries have same diameter as that of the continuous capillaries, which is 79 micrometer diameter है इनका. But the walls of the fenestrated capillaries are characterized by the presence of circular pores in the lining endothelial cells. Fenestra means window. These pores range from 60 to 80 nanometer in diameter. They're found in locations where rapid exchange of bodily fluids and solutes is required. An example is intestines, endocrine glands and kidneys. तो यहाँ rapid exchange होना चाहिए ना kidneys में मैंने बताया कि 5 हमारे body का 5 liter blood pump हो रहा था. This is the cardiac output. कि 5 liter of the blood is being pumped, right? Stroke volume क्या होता है? 70 ml. के हर beat के साथ इतना blood pump हो रहा है. तो हमारी 72 beats per minute होती हैं. So you'll get the cardiac output which is 5 liter of the cardiac output. इसमें से रीनल ब्लड फ्लो कितना है? 1 लीटर. हर मिनट 5 लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें से 1 लीटर ब्लड आपकी किडनीज के पास आ रहा है. सो दिस इज द रीनल ब्लड फ्लो है ना. इसमें से भी 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होते हैं. सेल्स तो खैर फिल्टर आउट नहीं होते लेकिन ये फिल्टर आउट होता है. तो अगर आप 5 मिनट भी दें अपनी बॉडी को तो वो सारा का सारा 5 लीटर ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा किडनीज के साथ, किडनीज में से. सो किडनीज दे नीड अ वेरी रैपिड एक्सचेंज एंड सेम विद इंटेस्टाइन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो जहाँ भी रैपिड एक्सचेंज चाहिए होता है वहाँ फेनेस्ट्रेशन होती है. When you talk about sinusoidal capillaries, they're also called sinusoids, and the luminal diameter is 30 to 40 micrometers. So these are very huge. पीछे वाली कितनी थी? 6 to 7 to 9, right? 7 to 9 micrometers थी पीछे वाली. Here you can see ये 30 to 40 micrometer है. Their walls are irregular and tortuous. इनकी walls irregular हैं और tortuous means they're very twisted and they have a lot of turns. They also have intercellular gaps. पीछे तो हमारे पास सिर्फ fenestrations थी, circular pores थे, इसमें fenestrations में you also have intercellular gaps that exist between endothelial cells, due to which the blood can diffuse out of the circulation with only a minimal hindrance. Lining endothelial cells show pores. तो pores भी हैं, तभी मैंने येलो में हाईलाइट किया कि pores भी हैं और intercellular gaps भी हैं. endothelial cells के बीच में intercellular gaps भी हैं और endothelial cells के अंदर खुद भी pores भी हैं, fenestrations भी हैं. Phagocytic cells may be found to be located in the walls of the sinusoids. तो इसकी वजह से आप याद कर सकते हैं what are the major locations? Liver, spleen, bone marrow and medulla suprarenal gland. ठीक है. तो I hope मैंने इतना repeat कर दिया. Now this is clear. Again, this information you can see continuous capillaries in endothelium continuous होता है. यहाँ लिखा है small pores, but it's better for you to know completely it's continuous. इसमें कोई small pores कुछ भी नहीं होते. This is least permeable. This is found in muscle, skin, lungs, and blood-brain barrier to brain. Very important for you to know. याद करें examples is super important. Control. This allows controlled exchange of gases and small molecules. Fenestrated capillaries endothelium has fenestrations, window-like pores, more permeable than continuous. Obviously, it's more permeable than continuous. But kidneys may present with the intestinal mucosa में endocrine glands में. It allows rapid fluid and solute exchange. Sinusoidal discontinuous capillaries, wide gaps होते हैं, discontinuous endothelium as well as the basement membrane. Basement membrane intact था इन दोनों में, लेकिन यहाँ कर वो भी discontinuous हो गए. This is most permeable. It's found in the liver. ये ऊपर वाला example lung ये हम भूल जाते हैं अक्सर. So please try to recall that. Liver, spleen and bone marrow. अब continuous, least permeable और brain इसका example है. इसके अलावा lungs भी है, muscle भी है, skin भी है. Fenestrated, moderate permeability है. इसका example है kidney, intestinal mucosa and endocrine gland. Sinusoidal, most permeable है. इसका example है liver, spleen and bone marrow. ठीक है. And बाकी examples तो आपको पता है, ये gases का exchange allow करते हैं, small molecule का, ये fluids and solute का, and this allows passage of what do you call them, large molecules and even cells. ठीक है. तो ये आपको मैंने function में बता दिया. अब let's go over some MCQs and let's see how much do you know. सबसे पहले which type of capillary is present in brain? So if you can recall, very important case में बिल्कुल भी discontinuity ना हो, सिर्फ what we need वो ही जाए, तो continuous, right? Let's check the answer. Correct. Capillaries with fenestrations are typically found in fenestrations, kidneys, then you had intestinal mucosa and your endocrine glands. So C. Good. Which capillary allows passage of large proteins in cells? Remember? Yes, that was your discontinuous. जिसका दूसरा नाम था sinusoidal. The least permeable capillaries कौन सी होंगी? Obviously continuous. उसके बाद capillaries in the liver and spleen. Liver and spleen में phagocytic, which were discontinuous. इनका दूसरा नाम था sinusoidal. Which capillary is associated with the blood-brain barrier? Continuous with tight junctions.
Then rapid exchange of fluids and solutes occurs mainly in rapid exchange fluids का or solutes का. This was in fenestrated. Rapid, right? Rapid was obviously kidneys may required, which is incorrectly matched. The brain may continuous correct. Kidney may fenestrated, yes. Liver may sinusoidal, yes. Muscle may fenestrated, no. Muscle may which one should be there? It should be continuous, right? Yes, so very good. Good job.